So now we are going to substitute the values and we are going to solve this. First of all, radius of moon. Sorry, mass of Earth. Mass of Earth की value कितनी होती है? That is 6 into 10 raised to power 24. Fine. Multiply by radius of moon. Radius of moon कितना है? That is 1.7 into 10 raised to power 6 और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय you have radius of Earth. Radius of Earth is how much? 6.4 into 10 raised to power 6 square multiply by mass of moon. Mass of moon is 7.4 into 10 raised to power 22. 7.4 into 10 raised to power 22. तो ये हमने कर दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट. नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. ब्रैकेट सॉल्व करो. स्क्वायर है मींस यू हैव टू राइट इट ट्वाइस. फाइन. आफ्टर दैट पावर्स ऑन वन साइड, नॉर्मल वैल्यूज ऑन अदर साइड एंड सॉल्व इट. फाइन. इसको सॉल्व कर लेना. इफ यू फेस एनी कंफ्यूजन तो मेरे को बता देना, देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट. वैसे आएगी नहीं सॉल्विंग, क्योंकि ये हमने सॉल्विंग 3-4 बार करी है. फाइन. वीडियो इज ऑल्सो देयर. अब देख लेना कैसे मैंने आपको सॉल्विंग करवाई थी. फाइन. इट्स देयर विद योर ट्यूजडेज वीडियो. उसके साथ मैंने ये जो डेरिवेशन है इसकी वीडियो अटैच की है. अगर नहीं मिलेगी वीडियो यू कैन प्लीज व्हाट्सएप मी. ओके जी. एनी डाउट? एनी अदर डाउट? No, ma'am, all clear. Ma'am, can you tell once all formulas of all chapter? Who is this asking for all formulas? Bubble. Bubble, it's good you write all the formulas somewhere and then you send it to me. कि ma'am ये सारे formulas हैं. If there is something other than that, I can help you out. How can I write all the formulas right now? If you remember कि जो आपके main formulas थे after your chapter 8 and chapter 9, हमने वो सारे formulas लिखे भी थे. Fine. So I hope you have written that somewhere. Because see, writing formulas is not a problem. लेकिन ठीक है, हम जो कुछ formulas लिख भी सकते हैं. लेकिन अगर पेपर में उन formulas के अलावा कोई formula आ गया ना, then you will say कि this is out of syllabus. This is revision में ये नहीं हुआ था. So it's not that I can during revision time writing all the formulas is a very difficult thing. You understand what I mean to say? If any formula I miss out and that is in the exam, then what? कोई पर्टिकुलर टॉपिक बता दो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर बता दो जिसके फॉर्मूलास आपको चाहिए, देन आई कैन हेल्प यू आउट.
कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर हो तो यू कैन टेल मी. चलिए जी. So Bubble, we are going to Harjot, same question again. Chalo, okay, we are going to do this. I have just one question by Harjot. Harjot, I'm going to answer you personally about it. Okay? Then is Bubble. There is no other question. So Bubble, जितने questions, जितने formulas हो सके हम वो लिखेंगे. As much as possible. Fine. Because there is no as such question, as such doubt by anybody, any other student. So let's have the formulas. Hanji bacha, so first we are going to have the formulas from motion chapter. The first formula which you have is regarding speed. What is the formula of speed? Fine. So you can write that. Speed is distance over time. Fine. Then the second you have is average speed. That is total distance over total time. What is the total distance? Like this you are going to use if you have different distances. Like first 5 kilometers covered in 2 seconds, last 5 kilometers covered in 5 seconds. So you have different times for different distances. तब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, you have to total all the distances and total all the times and then you have to divide it. Fine. Next is velocity. That is change in displacement over time taken. Change in displacement over time taken. Similarly, you have average velocity. Average velocity that is whatever is your initial velocity. Fine.
प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये u v की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। u is for initial velocity, v is for final velocity. फाइन। If you have two velocities, आपको एवरेज निकालनी है। फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड फाइनल वेलोसिटी, add them and divide that by 2. Next you have acceleration. Acceleration we write it with small a and it is equal to v minus u over t, where v is your initial final velocity, u is initial velocity, divide by t for time. Fine. You have two kinds of acceleration. It can be positive acceleration, it can be negative acceleration. That is based upon कौन सी value greater है. If you have a greater value of initial velocity and smaller value of final velocity, तब आपकी negative acceleration बन जाएगी, क्योंकि देखो u के आगे क्या है माइनस, तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर v के आगे क्या है प्लस, सो अगर v की वैल्यू ग्रेटर होगी तो कौन सी हो जाएगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन. फाइन. देन ओके, लेट्स ट्राई फॉर दिस दैट एटलीस्ट हम जो हमारा मोशन चैप्टर है, क्योंकि बेसिकली सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं वो इसी चैप्टर में हैं, एंड दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच आर कैरी फॉरवर्ड इन ऑल द अदर चैप्टर्स एज वेल. ठीक है, ये वो फॉर्मूलाज हैं अगर मोशन चैप्टर के, जो अगर आप कर लोगे इट इज कैरी फॉरवर्ड इन ऑल योर अदर चैप्टर्स एज वेल. एक्सेलरेशन इज कमिंग इन ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, तो formula क्या है, we have done that in the motion chapter. Okay, so next formula you are going to have is the three equations. Fine, three formulas, those are the equations of motion. We have already written it earlier, writing again. V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at square, and 2as is equal to v square minus u square. Fine. And what their symbols represent? V is your final velocity, u is your initial velocity, a is acceleration, t is time. Fine. S is displacement, बाकी सब वैल्यू सेम है. u है इनिशियल, t टाइम, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी. फाइन. सो एज पर न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूलाज को चूज करना है एंड देन यू हैव टू यूज देम. द लास्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट formula which we have is to find out the velocity of the object when it is moving in a circular path. Fine. So when the object moves in a circular path, that time what the velocity? Velocity क्या होता है? It is displacement over time. ठीक है ना? तो it moves in the circular path. तो ये होगी इसकी displacement, which is done by the circumference of the circle. How much path it is going to cover? Fine. Divide by time. Time it's going to take, we write it with t. So this is the formula we are going to have. Distance की जगह पे हमने क्या लिया? Circumference of the circle, because it goes like this. Okay. So this is all about the chapter motion, chapter 8, formulas. हाँ जी बाबल, I hope you are happy now. क्योंकि मेजॉरिटी जो फॉर्मूलाज थे वो इसी में थे. इन अदर चैप्टर्स यू हैव 3-4 ऑफ द फॉर्मूलाज, सो यू कैन डू दैट. हाँ, कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट आया, यू हैव टुडेज डे, यू हैव टुमारोज डे. फाइन, आज सैटरडे है, यू हैव फुल
afternoon, evening with you, night with you, fine. Then Sunday you have complete with you. If you have any doubt, you can definitely text me. I'm going to help you out. Thank you so much. All the best for your exam. Take care of yourself. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. God bless you all.